Namaste Students. Today's your activity, this type of origami bookmark. This is a pencil. Your step number 1, you have to take one paper जिसकी width होगी 2 inches and length is 8 inches. Okay. Step number 1, आप 1 inch fold करेंगे. Step number 2, then step number 3, like this. Then step number 4, both side fold. Step number 4, then step number 5, again fold. ये एजेस का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पेंसिल की लीड है. Yes, this is a step number 5. Then like this. Then step number 6, again 1 inch fold. Then step number 7, ये आप यहाँ तक पेपर लाकर इस टाइप से अच्छे से प्रेस करेंगे. Step number 7. Then step number 8. Both side fold. This is your last step, step number 8. ये step number 8 में आपकी पेंसिल कंप्लीट हो जाएगी और ये आप लास्ट में स्टिक कर देंगे. और ये आपको ये लर्न होने चाहिए स्टेप्स. तो आप अच्छे से SUPW नोटबुक में एक पेंसिल बुकमार्क स्टिक करेंगे और ये स्टेप्स लिखेंगे. देन ये आप अटैच कैसे करेंगे किसी भी बुक में या नोटबुक में. ये देखिए आप, ये देखिए फर्स्टली आप सेंटर से पेंसिल के होल्ड करेंगे. देन आप ये रिबन, कोई भी रिबन आप यूज़ कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ डोरी. तो ये आप इस टाइप से रिबन होल में अच्छे से लगाकर टेप से अटैच कर देंगे. देन नेक्स्ट आप ये रिबन अच्छे से स्टिक करेंगे फेविकोल से और फिर सेलो टेप लगा देंगे. देन आप इस टाइप से आप ये बुकमार्क यूज कर सकते हैं. ओके, लाइक दिस. थैंक यू स्टूडेंट्स.